नमस्कार। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए मान्यवर आपका सादर आभार। अत्यंत आदर भाव से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण इस्कॉन के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। इस्कॉन का मिशन भगवत गीता और अन्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण चेतना के विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर समाज की भलाई को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देशों में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन। कोरोना कालखंड में भी इस्कॉन ने आगे बढ़कर लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। इस्कॉन के मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मल्टीनेशनल स्कूल भक्ति वेदांता वैदिक गुरुकुल के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं स्वस्ति वाचन। हरि ओम सहना शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और अब मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य श्री श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी, chairman of the ISKCON, and all devotees participating in this auspicious event today. It is great pleasure and privilege for me to be here today at the memorable auspicious ceremony in commemoration of the 125th birth anniversary of the Srila Bhakti Sri Vedanta Swami Prabhupada ji, founder and Acharya of ISKCON. For millennia, India has served as the seat of knowledge. It has taught countless people the righteous path of life.
The life of Srila Prabhupada ji is in itself a story of dedication, devotion, determination and courage. Today, ISKCON, the movement founded by Swamiji, is globally known for a commitment, dedication to the propagation and promoting Bhagavan Sri Krishna teachings and Bharatiya culture, knowledge and tradition to practical solution to the problems of people and make the world Vasudhaiva Kutumbam. Due to the efforts of Srila Prabhupada ji and his followers, today one can see big number of people, different nationalities, wearing saris and dhotis, chanting Sanskrit mantras, reading Srimad Bhagavad Gita and other Puranas. This is indeed a cultural revolution brought about by Srila Prabhupada ji as the cultural ambassador of our great heritage and philosophy. The International Society for Krishna Consciousness today is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. Srila Prabhupada ji several times remarked that he had a deep desire to revive and spiritual cultural India. Along with promoting culture, ISKCON has been forefront service activity for welfare of the people. Particularly downtrodden. Even during the COVID pandemic, I had opportunity to visit Mega Kitchen at Dwaraka National Capital in Delhi, where free meals for 4 lakh needy people was being cooked and distributed. Srila Prabhupada ji is also introduced our spiritual festivals to the world, be it in the form of this Jagannath Rathayatra, which he brought to the Western world for the first time, 1969. One of his greatest achievements that he was an exemplary ambassador of India's ancient civilization. This is because of he carried the same tradition values that are now being promoted by the followers through education, culture and welfare. Under dynamic leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, over past few years, India has witnessed a surge in our soft power initiative of Prime Minister Narendra Modi ji. The world celebrates yoga with us. Today, Ayurveda has become the favored alternative means of wellness. Under leadership of the Narendra Modi ji, India is regaining her cultural glory as a land of spirituality and cultural wealth. I once again welcome you all the wonderful this occasion, and make Krishna and his teachings guide through our dharma of public service and welfare. On behalf of the Ministry of Culture, I thank the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for releasing the commemorative plan on the occasion. Hare Krishna, Jai Hind. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। स्वामी प्रभुपाद का कहना है कि जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्दों से कृष्ण की सेवा करने का कार्य करता है, वो आत्मा इस भौतिक संसार में रहकर भी मुक्त है। इस्कॉन ब्यूरो के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। मैं आदरणीय श्री गोस्वामी महाराज को उनका संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय कृष्ण रेड्डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, आपका आभार कि आप लोग ने अपना कीमती समय दिया है इस शुभ कार्य के लिए। जैसे आप जानते हो, हम ये साल प्रभुपाद जी का 125वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। प्रभुपाद कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने में यह हरिनाम का प्रचार होगा, और इसको सफल बनाने के लिए बाबा जी प्रकट हुए थे कैलकाटा में 1896 में। छोटी आयु में ही उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी थी, और छोटी आयु में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना भी शुरू कर दिया। 1922 में एक महान संत को मिले। उस वक्त प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में थे, और 1922 में मिले एक महान संत जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने देखा कि ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ इस प्राचीन भारतीय संदेश को विदेश में और अंग्रेजी देशों में इसका प्रचार करो। ये आदेश दिया था 1922 में, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। अंत में 1935 में 1965 में विदेश गए केवल 40 रुपए के साथ, और उनके पास एक फ्री टिकट थी कार्गो के जहाज में। प्रयास किया था लोगों से चंदा लेने के लिए, इतने सफल नहीं हुए। तो कार्गो शिप में गए, और 35 दिन का सफर था। और जब न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके मन में यही था कि हमने इस संदेश का प्रचार करना है। बड़े संघर्ष के साथ बाबा जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और बहुत ही संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पहला ISKCON का केंद्र बना था न्यूयॉर्क में 1935 में। आज विश्व के कोने कोने में आप मेरी संस्कृति का प्रभाव देखते हो। पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा तो प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने देखा विदेशियों को साड़ी पहनते हुए, धोती पहनते हुए, तिलक लगाते हुए। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही ग्रंथों का अनुवाद किया। उनके गुरु महाराज का आदेश था वैदिक साहित्य का अनुवाद करो, और थोड़े समय में ही भागवतम, गीता और ग्रंथों का अनुवाद किया। आज 70 करोड़ से अधिक किताबें वैदिक साहित्य के ऊपर विदेशों में पढ़ी हैं, और आज बड़े महाविद्यालय जो हैं वो भी इन ग्रंथों का लाभ उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लगभग 70 ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनका अनुवाद आज विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। आज आप विश्व के किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं तो गीता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो वैदिक संस्कृति है तो पूरे मानव समाज के सुधार के लिए है, और केवल हमें भारतीयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल भारतीयों के लिए है। और उन्होंने यथारूप वैदिक संस्कृति का प्रचार किया सारे विश्व में, और केंद्र भी खोले। बाबा जी ने फिलोसफी डिस्कशन के द्वारा ये साबित किया कि वैदिक साहित्य का उपयोग आज इस आधुनिक युग में भी हो सकता है। तो हम बड़े आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है इस योजना को सफल बनाने के लिए। बाबा जी इच्छा थी पूरे विश्व सुखी बने, लोगों का चरित्र हो, शांति की प्राप्ति के हम प्रयास करें। ये जब हो सकता है तो हम शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठा, और ये जो संदेश है वे मानस मानते हैं। साथ में सामाजिक सेवा विभाग था,
बाबा जी ने एक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था और कहा जाता है कि ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम तो हम लगभग विश्व के हर कोने में कर रहे हैं। ये लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और इसके साथ जब सामाजिक सेवा की, जैसे जब कोविड आया था, कोविड के कैंप खोले हर जगह समाज की सेवा के, तो भारतीय संस्कृति का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। कई विदेशी पंडित स्कॉलर भारत में आए और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अनुवाद किया, जो असली भाव था वो बदल दिया। प्रभुपाद ने ये लिखा है, these books are for everyone। एक बड़े फिलोसफर थे वेस्ट के, कॉक्स, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद was 1 in a million, such a great devotee। और आज जो वैदिक संस्कृति का प्रभाव है ये बढ़ते जा रहा है। हम बड़े आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शुभ अवसर पर समय दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे केंद्र में सबसे बड़ी गीता की स्थापना करने के लिए, तो हम आभारी हैं कि आप लोग सहयोग दे रहे हो। ये जो कॉइन आपने रिलीज करने जा रहे हो, ये 125th एनिवर्सरी का स्पेशल कॉर्पोरेटिव कॉइन है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और फिर से आभार कर रहे हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपकी सरकार को और भी शक्ति दे कि वो देश को मार्गदर्शन दे सके। बहुत जरूरी है कि देश को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास भी आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, तो शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम ठीक मार्गदर्शन दे सकते हैं। और प्रजा जब इस शिक्षा का लाभ उठाएगी तब देश में शांति, विश्व में शांति आएगी। जो वैदिक साहित्य है इसमें शांति का संदेश है पूरे मानव समाज में। बहुत शुक्रिया, भगवान आप लोगों को, प्रधानमंत्री उनकी सरकार को और भी शक्ति दे इसको मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय गोस्वामी महाराज जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक करबद्ध आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ द ISKCON Bureau, respected Mr. Gopal Krishna Goswami, and all our friends, Krishna devotees who have joined us on this sacred occasion from different countries across the world. Day before yesterday, we celebrated Janmashtami, the birth of Krishna, and today we are celebrating the 125th birth anniversary of Srila Prabhupada ji. This is like experiencing at the same time the happiness and satisfaction that we get from meditation. It is this emotion that millions of followers
of Srila Prabhupada Swami and millions of Krishna devotees are feeling and experiencing today. I can see all of you on the screen in front of me, devotees from different countries. It feels like hundreds of thousands of minds are united with one emotion. Hundreds of thousands of bodies are linked with each other through a common consciousness. This is that Krishna consciousness, the awareness and light of which Prabhupada Swamiji spread across the world. Friends, we all know that Prabhupada Swami was a charismatic Krishna devotee, but he was also at the same time a great patriot of India. He took part in India's freedom struggle. He even refused to take his diploma from the Scottish College to support the non-cooperation movement. Today, it is a happy coincidence that the 125th birth anniversary of such a great patriot is taking place at a time when India is celebrating Amrit Mahotsav, the 75th anniversary of its independence. Srila Prabhupada Swami used to always say that the reason he traveled to different countries of the world was because he wanted to share with the world India's invaluable treasure. The spirit of India's knowledge and science, our life culture and traditions, the spirit of these have always been Atha Bhut Dayam Prati. This means only for living beings, only for the welfare of all living beings. The last mantra of our ceremonial rituals is always Idam Namamam. This means this is not mine. This is for the entire universe. This is for the benefit of all creation. Therefore, seeing in him the potential, the respected Guru of Swamiji, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, instructed him to take India's thought process and philosophy to the world. Srila Prabhupada ji made his Guru's instructions his mission, and the results of his devotion and hard work can now be seen in every corner of the world. During this event that represents the elixir of the energy of India's freedom, India too, with its slogan, inclusive efforts for collective gain with everyone's trust, has made such determined decisions a basis for its onward journey. At the heart of our resolve, the very basis for our targets, is the spirit of global welfare. And all of you are aware how important collective efforts are for us to fulfill these goals of ours. If Prabhupada ji alone was able to give so much to the world, then when we all work together with his blessings, you can imagine what we can achieve. We will definitely reach that peak of human consciousness which will enable us to play an even greater role in the world
and spread the message of love to every human being. Friends, yoga is an example that demonstrates how much India can give the world for the benefit of humanity. We can see today that across the world, our yoga traditions are becoming popular. We are resolved to ensure that the entire world benefits from the sustainable lifestyle that we follow in India, from sciences that we have, like Ayurveda. India has made the mantra of self-sufficiency that Srila Prabhupada often used to discuss, its mission. And the country is moving forward in that direction. Often, when I talk about our goals to achieve a self-sufficient India and to make in India, I give my officials and businessmen the example of the success of the ISKCON movement. Whenever we go to another country, and when people greet us there with a Hare Krishna, then we feel such a great feeling of belonging. We feel such pride. Just imagine when people have the same feeling of affinity for made in India products, how we will feel. Learning from ISKCON, we can achieve these goals as well. Friends, Lord Krishna had said to Arjun, Nahi Gyanen Sadasham Pavitra Mihi Vidyate. This means that nothing is as pure as knowledge. After giving this supremacy, this importance to knowledge, he said one other thing. Mayeva man adhastasva, mayi buddhim niveshay. This means that after acquiring knowledge and science, we must dedicate our minds and intellect to Krishna. We must dedicate them to devotion to Him. This belief, this strength too, is a kind of yoga which has been described in the 12th chapter of the Gita as a Bhakti Yoga. And this Bhakti Yoga is very powerful. India's history too bears witness to this. When India was stuck in the deep pit of slavery, the India that was suffering from injustice, atrocities and exploitation was not able to focus on its knowledge and power. Then it was this devotion that kept India's consciousness alive and kept India's identity intact. Today, scholars try to assess that if it wasn't for the social revolution during the era of Bhakti, we don't know where India would be today and in what form. However, in those difficult times, great saints like Chaitanya Mahaprabhu brought our society together with the spirit of Bhakti and gifted us with the mantra of Vishwas and Atma Vishwas, which means faith and self-confidence, faith-based discrimination, social superiority and inferiority, the privileged and the unprivileged. Bhakti removed all of these and established a direct relation between living beings and God. Friends, if you study the history of India, you will discover that in order to maintain this connection to Bhakti, all through the different eras and times, many rishis and maharishis and sages
came into the society. At one time, a sage like Swami Vivekananda came into our society who took our knowledge of the Vedic scriptures to the West. Similarly, when it was time to gift the world with Bhakti Yoga, it was Srila Prabhupada and ISKCON who took on the responsibility. He worked towards bringing Bhakti Vedanta together with the consciousness of the world. This was no ordinary work. He started the ISKCON mission at the age of around 70, at a time when most people start decreasing their scope of daily work and tasks. This is an inspiration for our society and for each person. Oftentimes we see people say, I'm too old now, or I would have done a lot, or now is not the right age for all this work. But Prabhupada Swami always remained active towards his resolves from childhood right through his entire life. Prabhupada ji sailed on a ship to America, and at that time, with hardly a penny in his pocket, and all he had was the Gita and the Srimad Bhagavat as his wealth. On the way, he even had 2 heart attacks. This is during his trip. When he arrived in New York, he had no means of getting a meal and no place to stay. But in the next 11 years, what the world witnessed is, if I were to use the words of Honorable Atalji, what Honorable Atalji said about him was, what he has done was nothing less than a miracle. Today, there are hundreds of ISKCON temples and several gurukuls in various countries across the world that keep the Indian culture alive. ISKCON has taught the world that in India, faith, astha, means exaltation, enthusiasm, and exhilaration, and faith in humanity. Today, often in countries across the world, we can see people doing kirtan, dressed in Indian attire. Their clothes are simple. They have musical instruments like dholak and manjira in their hand, and they are singing songs of Lord Krishna, and we can see that these devotees are filled with inner peace. Onlookers might think that maybe this is a festival or some kind of special function, but here in our society, this kirtan, this function, and singing devotional songs are an integral part of our lives. This joyous form of faith has constantly been attracting people all over the world. And this happiness is giving new hope to this stress-ridden world. Friends, in the Gita, Lord Krishna says, Adveshta sarva bhutanam maitraha karuna evacha nirmamo nirhankara sama dukha sukha kshami, meaning that who loves life form, has a feeling of compassion and affection for them, doesn't hold a grudge against anyone, is God's beloved. It is this very mantra that has been the basis of India's thinking for thousands of years. And the base of this thinking has been done by our temples. ISKCON temples have emerged as the modern center of this very tradition. I remember when there was an earthquake in the Kutch region, how the people of ISKCON came forward to serve the people. Whenever our country has faced any calamity, whether it is the tragedy in Uttarakhand or the destruction caused by cyclones in Odisha and Bengal, ISKCON
has supported the society. Even during the corona pandemic, you have been always arranging for food and other essentials for patients, their family members, and immigrants. Besides the pandemic also, you have been relentlessly providing food and support to hundreds of thousands of poor. I am regularly updated about how ISKCON has made hospitals for COVID patients and now are also participating in vaccination programs. I express my deep appreciation to ISKCON and all the devotees in ISKCON for your service and sacrifice. Friends, today, with the mantra of Satya Seva or Sadhana, which means truth, service, and meditation, not only are you serving Lord Krishna, but are also playing the role of brand ambassadors of Indian ideals and culture to the whole world. India's eternal culture or sacrament is Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Nirmayaha. This thinking has become the resolve of you and of hundreds of thousands of people through ISKCON. Love for the Lord and to see God in living beings is the only path for fulfillment of this resolve. It is this path that the Lord has told us about in the Vibhuti Yoga chapter. We firmly believe that we will not only practice this mantra of Vasudevaha Sarvam in our lives, but will also make mankind aware of it. With this spirit, I thank you all. Hare Krishna. वचनों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से साधुवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विश्व भर से हमारे साथ जुड़े अतिथिगण और भक्तगण का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।